Now with this, moving on to the third point, which is product of two numbers. तो ये बेसिकली एक इक्वेशन टाइप में हो गया कि जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स will be equal to the multiplication or the product of the LCM and HCF of those particular numbers. यानी कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स है तो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट of the LCM of those numbers and the HCF of those numbers. So for the illustration, we can see the HCF and LCM of any two numbers are this and this respectively. If one of the number is 315, find another number. So इसमें कैसे भी पूछ सकता है वो. For example, here we have four things. We have the first number, the second number, and इनका product जो it will be equal to the LCM of the given numbers into the highest common factor of these given numbers. So here we have four things. So अगर हमें इनमें से कोई भी तीन चीज़ें पता है, for example if we know any three things out of these four, we can find out the one missing thing. For example, if the LCM was of two numbers was not given to us, but we are given the two numbers and their HCF, then we can find out the LCM by this formula also. So the required number will be this, and the answer to this question will be 252. Now here the fourth point says to find the greatest number that will exactly divide x, y and z, required number. So here we have the concept of greatest number, which means highest common factor, which will exactly divide these particular numbers. तो इसमें simply हम HCF पूछ रहे हैं, greatest number, which means highest. तो greatest का मतलब highest ही हो गया यहाँ पर, highest common factor of x, y and z, which are the given numbers. So this is the question illustration. Find the greatest number that will exactly divide these numbers, and so their highest common factor will be equal to 40. Now the fifth point says to find the greatest number, again the greatest number, which means ये question भी HCF का है, that will divide x, y and z, leaving remainders a, b and c respectively. Which means कि if a number divides x तो जो remainder आए वो a आए, लेकिन अगर वही सेम नंबर y को डिवाइड करेगा तो इट गिव्स द रिमाइंडर b, एंड इफ द सेम नंबर डिवाइड्स z देन इट गिव्स द रिमाइंडर c. बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं कि अलग अलग नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे एक सेम नंबर से विच विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देन द रिमाइंडर शुड बी a, b and c respectively for the given numbers. In this case we simply have to divide the remainders from the numbers जिनसे हमें डिवाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल x माइनस ए, y माइनस बी एंड z माइनस सी, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स. एंड द रीजन फॉर दिस इज कि जो नंबर्स हैं उनमें एक्स्ट्रा जो चीज़ है दैट इज द रिमाइंडर्स. तो हम पहले ही रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड देन वी फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दोज नंबर्स, ताकि वहाँ तक वो कम्प्लीटली डिवाइड कर ले and बाद में जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है that will be a, b and c for the numbers. Now for the ninth point, to find the greatest number that will divide x, y and z leaving the same remainder in each case. In this case it asks for same remainder. यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ कि x, y and z should be the remainder, a, b and c should be the remainder. I'm sorry. In this it is just saying that the remainder should be same. So when value of remainder r is given, for example हमें बोल दिया गया कि 5 रिमाइंडर चाहिए, तो 5 जो रिमाइंडर है वो तीनों नंबर्स का रिमाइंडर रहेगा, राइट, तीनों नंबर से डिवाइड करके आएगा. तो इसमें बोला है कि when value is given then it simply it will be the same thing जो हमने अभी 5th point में देखा, right. We'll simply subtract the remainder from the numbers and then we'll find out the HCF of these particular numbers. But when the remainder is not given, then we'll subtract numbers. For example, we have numbers x, y and z. तो पहले we'll subtract x and y, then y and z, and then z and x. इनको mod करना है, यानी कि हमें सिर्फ positive values लेंगे. For example, in this case, if y is bigger than x, then we do not have to put the minus sign in front of the number. ये mod है, so we'll take the positive value itself. And then इन तीनों numbers का हमें highest common factor निकालना है, and hence we'll receive the answer. So in the next video, we'll be dealing with the shortcut methods of least common multiple. Thank you.